मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू ममित अग्रवाल शो। आज हमारे साथ मोहन भाई पटेल हैं जिन्होंने ये कृष्णा टेम्पल बोल्टन में स्थापित किया। तो ये मोहन भाई मंदिर बनाने के पीछे प्रेरणा आपको कहाँ से आई और कैसे आपको लगा कि हाँ हमें यहाँ बोल्टन में एक मंदिर स्थापित करना चाहिए? हमारे पूर्वजों थे जो अभी कई जिंदा है, कई तो परलोक चले गए। उन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है उसमें। ये अगर मैं नाम देने जाऊँ तो पूरा लिस्ट है लेकिन उन लोगों की कृपा से जो अफ्रीका से आए थे और इधर आके इंडिया से आए थे, बसे थे, उन लोगों ने सोचा कि हमारी कम्युनिटी धीरे धीरे बढ़ रही है, तो उन लोगों ने सोचा कि एक कोई मंदिर चाहिए जहां हम अपने सनातन धर्म के सभी जो त्यौहार है वो मनाएं और सभी कम्युनिटी को साथ में इकट्ठा करें और आगे चले और अपने बच्चों को कुछ सिखाए आगे कि क्या करना है, क्या होता है। तो उन लोगों के कि बहुत हमारे पर रहम है कि जिन लोगों ने शुरू किया था। मैं उसके पहले भी ये चलता था लेकिन दूसरे हॉल में ये फंक्शन करते थे। फिर बाद में हम लोगों को कि ये नीड है, ज़रूरत है, तो फिर उसने लोगों ने ये शुरू किया। तो जब आपने ये मंदिर स्थापित किया, क्या क्या मुश्किलों का सामना आप लोगों को करना पड़ा जगह ढूंढने में और सबको एक साथ लेके चलने में? क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि हमारा हिंदू समाज तो काफ़ी बटा रहता है, तो भाई ये इतना बड़ा काम करने से पहले हमें सबको एक साथ एक सूत्र में लेके चलना होता है। इसमें हमारे कम्युनिटी का बहुत बड़ा हाथ है। पहले तो जैसे आपको पता है कि उस समय पे पैसे की दिक्कत होती है। पहला प्रश्न यही उठता है कि पैसे कहाँ से लाए इतना। जैसे अभी जैसे देखो कुछ भी लेना हो तो उसकी प्राइस बहुत होती है, तो अभी भी सोचते कि ये नहीं ले सकते। यही प्रश्न उस टाइम पे था। तो क्या किया हमने कि हमारे कम्युनिटी से लोगों को अपील की कि लोन दे। तो हमारे कम्युनिटी मेंबर्स ने इंटरेस्ट फ्री लोन दी। वो बहुत बड़ी बात है। और इंटरेस्ट फ्री लोन दी और कई ने जब हम वापस देने को गए कि आपने ये 500 पाउंड दिए है तो वापस दे रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया। तो कई मेंबर्स, कई हरिभक्तों ने ऐसे बोला कि नहीं यार हमको नहीं चाहिए, आप ही रख लो। ऐसे भी कई है और कई ने ले लिया क्योंकि उनको भी ज़रूरत है। और उन लोगों ने वो जो ध्येय से दिया था कि हमको मंदिर लेना है, जगह लेनी है, एक कोई बिल्डिंग लेनी है, तो उसमें हमारा भी थोड़ा साथ हो। और हमने इसीलिए मांगा था कि इंटरेस्ट फ्री, तो वो मान गए और उन लोगों ने इंटरेस्ट फ्री लोन दी हमने। जो मैं तब ट्रेजरर था तो हम घर घर जाके इंटरेस्ट फ्री लोन लोगों को वापस दे रहे थे। तो ये बहुत बड़ा मसला था पहले, तो हमने इसे हल किया था। ये तो सही बात है कि हरि की इच्छा है तो भाई सब कुछ ऐसा मुश्किल से मुश्किल कार्य आसान हो जाता है। और उनको अपना मंदिर बनवाना था तो हाँ जी। तो यहाँ पर बोल्टन में हमारी जो इंडियन कम्युनिटी है, आई थिंक अराउंड 6,000 to 8,000 है। और हमारे यहाँ पे बोल्टन में 5 अलग अलग मंदिर है। तो बोल्टन में जो हमारी इंडियन कम्युनिटी है उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्योंकि मैंने देखा है कि सब लोग बहुत आगे बढ़ के सहयोग करते हैं, कोई भी कार्यक्रम होता है। हाँ, इधर इस मंदिर के किसी को ऐसा बात नहीं है कि नहीं आना। सभी कम्युनिटी के जो हिंदू हो वो सभी फेस्टिवल में हिस्सा लेते हैं, हमको साथ देते हैं तन मन और धन से। तो उन लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं इस समय पे। और जब भी देखो वो दिल से करते हैं, सभी कम्युनिटी के आते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही कम्युनिटी। जैसे कि आपने बोला कि 3-4 मंदिरों है, तो वो लोग उधर भी जाते हैं, उधर भी हिस्सा लेते हैं, क्योंकि अलग अलग दिन को अलग अलग त्यौहार होते हैं। तो फिर और हमारे बोल्टन में बोल्टन हिंदू फोरम है जो 28 कम्युनिटी है, कैसे 28 कम्युनिटी, उन लोगों का सबका भी साथ है। और वो भी हमको सलाह सुझाव देते रहते हैं टाइम पे जब कुछ हो तो। और वो लोग भी फंक्शन करते हैं तो सभी कम्युनिटी के वहाँ जाते हैं और साथ देते हैं। तो इसीलिए हमारा जो हिंदू परिवार है तो
ऑल ऑर्गेनाइजेशन, सभी ऑर्गेनाइजेशन ट्राई करते हैं कि सभी साथ में रहे और मिलजुल के जो भी काम करे वो करे। नहीं, आपको तो मैंने काफी अलग अलग इवेंट्स में भी देखा है, आपका मतलब हृदय से समर्पण रहता है हमारे जो भी इवेंट्स होते हैं और सारी कम्युनिटी को एक साथ लेके चलने का। और मंदिर में तो खैर आप मतलब तन मन धन से जिसे कहते हैं कि लगे रहते हो आप। और पिछले जब से मंदिर शुरू हुआ है तब से आप लगे हुए हो। हमने तो भाई कृष्णा टेम्पल, मोहन भाई, ये दोनों नाम साथ में ही सुना है। कृष्णा टेम्पल बोल्टन, मोहन भाई कृष्णा टेम्पल बोल्टन। मैं अकेला नहीं, कोई भी आदमी, कोई भी मनुष्य अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, सभी का साथ होना चाहिए। और मेरा ध्येय यही होता है कि सभी को साथ लेके चलो, तभी आप सक्सेसफुल होते हैं। कभी आपको कुछ करना हो तो आप कर सकते हैं, अगर आपके साथ कोई नहीं है तो आप अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए मेरा ये मोटो है कि सभी को साथ में लेके चलो। मेरे ये हमारी कम्युनिटी है और दूसरी कम्युनिटी में, जब हिंदू फोरम में जाता हूँ तभी भी बोलता हूँ कि लड़ना झगड़ना बंद करो, अपना मेरा मेरा बंद करो और हमारा करके आप आगे चलो, तो फिर अच्छा लगता है। साथ, हाँ, साथ तो सबका ही चाहिए होता है, लेकिन समर्पण कुछ लोगों का विशेषकर से समर्पण होता है, तभी चीजें आगे बढ़ पाती हैं। क्योंकि ज्यादा लोग काम पे होते हैं तो समय कम दे सकते हैं। अभी कई आदमी रिटायर होते हैं तो कोई ऐसे भी सोचते हैं कि अभी रिटायर है, अभी घर में बैठना है। लेकिन रिटायर होने के बाद भी मैं निवेदन करता हूँ, कोई रिटायर जो हो गई है वो आगे आए और अपना समय ये अच्छे काम में जुटाए, तो लोगों को कुछ लाभ होगा, आपको भी दिल से थोड़ी तसल्ली होगी कि मैं कुछ कर रहा हूँ, तो आपको भी थोड़ी शांति मिलेगी। आज के काल में तो ये कहते हैं समय दान तो मतलब धन दान से भी ज्यादा महत्व रखता है, क्योंकि लोगों के पास पैसा तो फिर भी है, समय नहीं। सही बात है। तो हाँ, ये आप सही कह रहे हैं कि जो लोग रिटायर हो गए हैं और घर पे हैं वो थोड़ा सा कोशिश करें और आगे आए, और जो भी मंदिर है या जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर अपना जो भी सहयोग कर सकते हैं, 9 घंटे 4 घंटे हफ्ते का, 10 घंटे हफ्ते का, वो करें। तो 2 चीज़ें होंगी कि भाई एक तो अंदर से लगेगा कि हम कुछ कर रहे हैं, एक पॉजिटिव फीलिंग बनी रहेगी, और साथ ही साथ में क्या है कि आप लोगों के सहयोग से ऑर्गेनाइजेशन भी आगे बढ़ेगी, क्योंकि भाई जितना एक्सपीरियंस आप लोगों को है उतना हम नई जनरेशन को नहीं है, तो आप लोगों के एक्सपीरियंस है, हम लोगों को भी सीखने को कुछ मिलेगा इसमें। तो और इसमें मोहन भाई, आप इतने सालों से कृष्णा टेम्पल में से जुड़े हुए हो, कोई ऐसा इंसिडेंट आप बताइए जहां पर आपको एकदम लगा कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, अब कुछ हो नहीं सकता, और एकदम से भगवान की ऐसी कृपा हुई और कि जो आपने सोचा है बस वो होता चला गया। ऐसा तो कुछ नहीं, लेकिन जब आप दिल से, सही दिल से, सच्चे दिल से कोई भी काम करो तो आपको कोई रुकावट नहीं लगती। अगर कोई भी आपको कुछ भी बोल के जाए तो वो, अगर आपने दिल से और सच्चाई से काम किया हो तो ऊपर वाला है आपको साथ देगा, वो मेरा मानना है। और मुझे अनुभव हुआ है ऐसा कि वो है जो मेरा कोई साथ दे रहा है। जैसे मानो कि ये आपकी हेल्थ हो और मंदिर में कोई प्रॉब्लम हो तो वो ऊपर वाला साथ देगा। जब आप सच्चे होते हैं तो कोई किसी को बिगाड़ नहीं सकता, वो मैं मानता हूँ। चलिए, थैंक यू वेरी मच मोहन भाई। थैंक यू वेरी मच, मौका दिया है। आप लोग मतलब ये मोहन भाई की ने सब अरेंज किया आज का हमारा इंटरव्यू बापू जी के साथ। और मोहन भाई, कृष्णा टेम्पल, सब लोग आप लोग वैसे भी जानते होंगे जितने लोग बोल्टन में हो, और बाहर भी मतलब लेस्टर में, लंदन में भी काफ़ी लोग मोहन भाई से परिचित होंगे। तो कृष्णा टेम्पल मतलब जो भी आज है वो इनकी और इनके साथ कुछ और विशेष लोगों की मेहनत से है। और ये ज़रूरी है, अगर आप कुछ काम करने बाहर जाओ, अपना परिवार का भी साथ होना चाहिए। अगर परिवार में डिफरेंस हो तो आपका इधर मन नहीं लगेगा, ये बहुत ज़रूरी है। ये तो आप सही कह रहे हैं, सपोर्ट होना चाहिए, तभी आप फिर आगे बढ़ सकते हैं। सभी आपको लगता है कि पीछे हमारे कोई है, हाँ जी, वो भी सब ईश्वर की कृपा है। मैंने बोला अच्छे काम करते जाओ बगैर स्वार्थ के, तो ऊपर वाला देखेगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल दो, अगर आपका बच्चा कोई क्लास में नंबर 1 आया तो वो ऐसा नहीं कहता आपको कि मुझे प्रेजेंट ला के दो, आप खुद ला के देंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि आपने अच्छा किया है, तो मांगने की जरूरत नहीं होती है। इसीलिए आप सच्चे दिल से करो तो ऊपर वाला अपने आप देता है, और मुझे उसका भरोसा है।
हमारा गुरु जी पे। ठीक है, Thank जय you. श्री कृष्ण मोहन भाई। जय श्री कृष्ण। भावना जी हमारे साथ, जो कृष्णा टेम्पल की करेंट ट्रेजरर है, और इन्होंने अभी कृष्णा टेम्पल का कार्यभार संभाला हुआ है। तो वी विल टॉक विद भावना जी अबाउट मोर अबाउट कृष्णा टेम्पल, व्हाट इवेंट्स डू वी डू, एंड हाउ डू वी सेलिब्रेट डिफरेंट इवेंट्स थ्रू आउट द ईयर, एंड हाउ कृष्णा टेम्पल is working towards keeping the community together, and bringing them to celebrate different events. So yeah, good morning Bhavna ji, how are you? Morning, I'm good, thank you. So Bhavna ji, would you like to tell me something about since when you started coming to Krishna Temple, and what made you to choose that take up a position and do something for the temple? I've been coming to Krishna Temple since I was a kid. So our parents used to bring us here growing up every year, Navratri, Diwali, took part in the Diwali show, just celebrated all the festivals. And a couple of years ago, a friend asked me, should we join the committee? I've been working on the youth side since 2007. I've been helping out for the last few years. I'm the chair of the youth committee. We organise lots of activities for young people in the community. And then somebody said join the main committee, and maybe because of the generation gap, I was always reluctant to do that. But there was other people with similar background as myself. We all joined together. So I've been helping out here and there. And then this year, I'm a qualified accountant, so I was asked to do the treasury. Right. But I kept resisting because it's a lot of work, because I work full time. I've got 2 young children. But this year I bit the bullet. I was like, okay, let's do it. And I've been doing it since about May. And it's been really interesting and really good. I've sort of introduced some new things. Anyway, that's all about the finances. But in terms of the community activities, I think it's really helped us with the youth side as well. So we're bringing the kids in and try to encourage them to take part in a way that they can relate to taking part in the activities. So there's a lot more kids coming along, and obviously the Monday is about the whole family, but I think giving the kids the opportunities to take part in the puja, we're trying to build that in. We're working with the Hindu Forum as well to just do different activities. So yeah, the festivals, we have all the festivals throughout the year. We have an annual plan, and I know what's coming up, and I tried thinking this year for Ganesh, what I did was created a daily poster for the events. I'll be sharing that by WhatsApp, but I'm just trying to feedback this morning that you're getting good at this, and so just slowly introducing new things that encourage, I guess, people that are born here. So youth have always been a center of focus for not a lot of really. organizations. We've had to work hard to bring them in, because it's always been about the puja, and the kids just want to play. Yeah. No, I 100% agree. That's the hardest part. Even like being a parent, it's so difficult for us to even convince my 2 daughters. So when we talk about like a group of kids, oh my God, it's very challenging task. Yeah. So yeah, but I think I must say that what you are doing something in the right direction, because youth is our next generation, right? And unless and until we train our youth, or we guide our youth, then only we can expect the further generation to grow up with the similar values and culture. And if we ignore today youth, then obviously the next generation will be even more challenging. I do feel that our generation was ignored, like growing up, because our parents had their own struggles when they came to England, and building the community up from scratch. So I feel like our generation was ignored and we're less interested. But I really, I try to spark interest in my kids and the other kids in the community, and I feel that is growing now. Yeah. No, I think you are right, because if I look at my
childhood, obviously, we were told to do certain things, but we were never explained why. Yes. But to be honest, I would say Lord Krishna's blessing was on us, that, we are still talking. No, there was something there, and I think sometimes you do have faith in God, and like things just happen, and it's like, okay, so maybe there's a reason why I'm in this position. Yeah. That faith has always been there. No, 100%. So when we talk about youth, obviously it's a very challenging task. Everyone knows about it. What kind of challenges do you face? And would you like to, give a certain example where, you were having a challenging time and how you handled that situation? Because that may give some ideas to listeners. So I guess after lockdown, obviously the whole world changed overnight kind of thing. So when it really slowly started coming back out of lockdown, there was still a lot of uneasiness. And that was quite a challenging time to bring the community back together. Like, can we put this event on or not? What are the restrictions facing us? Will we get the interest? So it took us a good while, probably a good couple of years, to build the community back up. And we used to enter a dance competition, Rasgarba competition organised by the Hindu Council in Leicester every year, and that's not happened. Bolton always won trophies at that event, and our current group of girls that would take part, they've just never had the opportunity to take part in that event. And hopefully next year we hope to be able to train these girls, because once they get to a certain age, they're not interested always. They don't have the time of their exams and commitment, because it's quite a big commitment. So hopefully these girls will get the opportunity to take part next year. We've had funding available to get professional teacher to get them training. So we run dance classes at the Monday every week. It's during term time. So I think, coming back out of COVID was a big challenge. And, there's a lot of disagreements in terms of what we should do, how we should do it, what we can do. But we got there in the end, and we've got a really good group of kids that consistently attend, and we're just always looking for opportunities to give them to take part in sports or community cultural activities. I truly believe, COVID has helped, not helped, I would say, but changed our way of living, changed our views. And to be honest, that's what my observation is, post-COVID, people have become more humble and more acceptable towards others. Because before, it was a very stubborn approach, or very, I would say, rigid approach, this has to be done in this way, and people were following rules, regulations, and they were so strict with rules and regulation that they've stopped feeling like how it may hurt somebody else. But now, post-COVID, people have become more lenient towards, more open, more acceptable. Have you seen the similar change? I definitely think so. When we come to the Monday, like I said, kids just want to run around and stuff, and they always get told off and things like that. But, sometimes you just got to let the children be, and I think people are a little bit more accepting of that. And we can't let them just kind of run riot. So when we talk about youth, what do you think, which festival they look forward the most among all the different type of festivals we have? I think a lot of them now, I've seen a lot more interest in the kids. So Navratri is really good, and there's now in the Northwest there's a lot more accessible events within shows, been popular for years. But I think Navratri maybe hopefully to be able to draw colour in. And I think the Sena as well gets a lot of attention, and we dress the kids up as characters, and I think it really brings the community together. No, definitely. I've seen live examples as well myself. When we celebrate the Shera, it's Bisk, and we celebrate Diwali as well. Different temples, and also at Bisk as well, where everyone comes. But I still feel that obviously I'm not from Bolton,
and I'm a trustee at Bolton Into Forum since last 5 years now. My observation as an external person is that sometimes what we try to do is like, even though we have to attend, we like to attend certain events, but we restrict ourselves in attending that event for whatever reason, So I will not go too much in detail, but that's what my observations are. However, like looking at like 8,000 people, Indian community in Bolton, any festival we do must be smashed with people, like, thousands and thousands of people, should be attending, because Bolton is not a very big town, it's a very compact town, and we all know each other. So any event which is happening, everyone knows about it. Oh, this event is happening here. But I still feel there has to be a central, I would say, a group or something on social media or a WhatsApp group where we can share all the events information happening in Bolton in that group, and then again that can be spread it over among friends and family, because sometimes people do struggle to find. And Hindu Forum does do that, and does act as that body, so like they share. I think what you have to appreciate is as well, like the community, all of the temples I think in Bolton and community groups are all run by volunteers. So I think there's like pressure or an expectation that you should run like an organisation, like a business, be a bit more organised. But it's a community group. You haven't got that infrastructure that, when you go to the office, you've got like say computers, network systems. If you had all that, you can communicate a lot faster. Here, things have to, you need to pick up the phone and go to somebody's house to get something in place. So then the timing of events it's not planned as far in, and the Ganesh festival, prior to this we had 2 big events. We had Janmashtami, and we also had an annual an AGM meeting at Wolverhampton. So to plan those events and how you're going to bring the community together and coordinate that event, it's sometimes done at the last minute, so you can't get the messages out as quick as you want. And also, like, realistic, you said there's over 6,000 people in Bolton. This venue, as just can't cater for 6,000, so sometimes you have to keep your events a little bit small to manage your health and safety. So there's different complexities and factors that you need to consider. And I think individually all the organisations probably do that well, but where you want that integration and the bigger events and the growth probably struggle. No, definitely, I agree. And, I would like to request all our listeners and viewers that, obviously if you live in Bolton or around Bolton, you must, try going to different temples, because these temples are managed for you, and, your attendance is like, will definitely provide a lot of encouragement and motivation to people who are working selflessly, no money, on a volunteer basis, and obviously they'll feel happy when they see new faces coming over to the temple. And I could relate to that joy, when you see like, oh, there's a new group of people which you haven't seen. Through this Ganesh festival, we've seen a lot of new faces, and it's been really like heartwarming. Like I think we broke our record in the number of people we served food to yesterday. So it is really nice. And sometimes you feel that you are doing something right, because that is the reason. That's basically a prize or reward for your hard work. So I'm pretty sure we all can do that. Thank you very much, Bhavna ji, for your time today, and I wish you all the very best. And any support, like obviously you need from Bolton Into Forum or PHF Radio, please feel free. If you are doing any big event and you want to have a talk show prior to the event to tell public like, oh yeah, trying to do this, we can definitely arrange that. And thank you very much for everything. Thank you.